Hello bachon, let's read the question. The question says that find the real numbers x and y if x minus iy multiplied with 3 plus 5i is the conjugate of minus 6 minus 24i. So इस क्वेश्चन में हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i इक्वल है कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24i के. ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको हम लोग चेक देखेंगे. तो पहला की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जिस तरह से हम दो बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन द सेम वे वी कैन मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो. सेकेंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करना है, देन वी कंपेयर रियल पार्ट विद द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विद द इमेजिनरी पार्ट. Third concept, conjugate of complex number. Conjugate of complex numbers. Okay, conjugate of complex number. Suppose हमारे पास कोई complex number है z which is equal to a plus ib. तो उसके conjugate को find out करना हो तो we just need to change the sign of imaginary part. Okay, and last we'll use how we use to simplify, we use the concept how we simplify the linear equation in two variables. Linear equation in two variables. I am sure everybody must know how we simplify and find out the value of two variables in linear equation of two variables. We can use either elimination method, substitution method or cross multiplication method to find out those values. So let's start solving this question. So first step is to do what? We have to find out the product of x minus iy and 3 plus 5i. So let's do that. X minus iy, we have to multiply this with 3 plus 5i. So x into 3 is going to give us 3x. X into 5i is going to give us 5xi. Similarly, minus iy into 3 is going to give us minus 3yi, and minus iy into plus 5i is going to give us 5i I square y. I square is minus 1, so it will become plus 5y. Simplifying it, we will get 3x plus 5y plus, if I take I common, 5x minus 3y. So we have got real part of the complex number and imaginary part of the complex number. Now we have to find what? We have to find the conjugate of minus 6 minus 24i. As I told you, for finding the conjugate of any complex number, we only need to change the sign of imaginary part. So conjugate of minus 6 minus 24i is minus 6 plus 24i. Now, according to question, it is told that product which we got as 3x plus 5y plus 5x minus 3yi, 3x plus 5y plus I, 5x minus 3y is equal to conjugate of the minus 6 minus 24i, which is equal to minus 6 plus 24i. Okay, it is given in the question that we have to compare these two. Now we will do comparing real and imaginary
पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। सो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 5y विल बी इक्वल टू -6 और 5x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 24। ओके जब हमने कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो हमें दो इक्वेशंस मिले। लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। Since we have to find out the value of x and y, so we'll simplify these two linear equations to find the value of x and y. So let's use the elimination method for finding the value of x and y. So for that purpose, we'll multiply equation number 1 with 3 and then we will add to equation number 2 after multiplying it with 5. Okay, so let's do that. We'll get 3 into 3 is 9x, 3 into 5 is 15y is equal to 6 into 3 is -18. Similarly, now we multiply equation 2 with 5. So 5 into 5 is 25x, 5 into 3 is 15y and 24 into 5 is 120. Okay, now हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। So when we will add 15y minus 15y will get cancelled out. 25 plus 9 is going to give us 34x will be equal to 120 minus 8 is going to give us कितना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 102. Okay, नाउ हमें फाइंड आउट x को फाइंड आउट करने के लिए 34 हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो विल गेट हियर 102 divided by 34. So we know that 34 3 times कितना मिलेगा, 3 4 times 12 carry 1 9 plus 1 10. So value of x here हमें मिलेगा 3. So we have got the value of x. Now हम x की वैल्यू यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में and we will get the value of y. So substituting x equals to 3 in equation 1. Substitute करेंगे, we'll get 3 into 3 plus 5y is equal to -6. So we'll get here 3 into 3 is 9 plus 5y is equal to -6. So 5y will be equal to what? -6 minus 9. So y will be equal to -9 minus 6 is -15 upon 5 which is equal to -3. So we have got the value of x and y. हमें x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई है। हमें x की वैल्यू मिली है 3 और y की वैल्यू मिली है -3. So this is the final answer for this question. I hope everyone must have understood it well. Thank you. Best of luck.